everyone, this is Naina Chabra with my IELTS tutor. This is chapter 4 of writing task 2. In this chapter, we'll be understanding coherence and cohesion. Coherence and cohesion is one of the 4 marking criteria in your IELTS writing test. We have discussed about task response in the previous chapter. Now, we'll be talking in detail about coherence and cohesion. Coherence and cohesion है क्या और इसकी वेटेज कितनी है. जैसे कि टास्क रिस्पॉन्स कैरीज 25% of the complete marking criteria, similarly coherence and cohesion also constitutes of 25% of whole marking criteria. आपको coherence and cohesion में भी बैंड्स मिलते हैं out of 9. Now let's understand what is coherence and cohesion. बहुत ही simplified way में we'll be understanding coherence and cohesion होता क्या है. Now what is cohesion? Cohesion means when you are gluing your things together. कितना connected है आपका task, उसको कहते हैं cohesion. It simply means sticking together. How sticked are your ideas? How sticked are your paragraph? जितना अच्छे से आप लिंक करके अपने आइडियाज और पैराग्राफ्स को लिखोगे उतने ही अच्छे आपके बैंड्स होंगे कोहेजन में. व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस सिंपली मींस लॉजिकली अरेंज करना. हर चीज को सीक्वेंस में और लॉजिकली अरेंज करेंगे तो कोहेरेंस में बैंड्स बूस्ट होंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इन मच मोर डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स. नाउ you might have heard about connectors, which are also known as cohesive devices. So by using these cohesive devices or connectors, we make our writing much more coherent. तो इसको अपनी राइटिंग को कोहेरेंट बनाते हैं. ये कोहेसिव डिवाइसेस कौन से होते हैं? वर्ड्स लाइक, for example, when we are about to give an example, we can use for example to make a link. So examiner should know that we are going to write an example now. In conclusion, अगर हमने in conclusion लिखा है, it means we are going to write a conclusion. It is again making a link. It is connecting with other paragraphs. Now, however, moreover, so these are all some connectors or cohesive devices which we can use in a writing. Now, if you know how to use these cohesive devices effectively, no one can stop you to score good bands or 7+ bands in your coherence and cohesion. Now let's talk about coherence in detail. I have already told you that coherence means how well you organize the information. Coherence is how well your essay is organized, how easily it can be understood by the reader. कितना easy है reader के लिए understand करना आपका essay. We don't have to make it complicated. We don't have to add many things in your essay. It should be very clearly organized and understandable for the examiner. जितना easy to understand आपका essay होगा उतने ही ज़्यादा आपके bands होंगे. Now, so just ask you some question. Is your essay divided into clear paragraph? क्या आपका essay clearly divided है अच्छे paragraphs में? Are you sufficiently using paragraphing? ये आपने देखना है. दूसरा, do your ideas progress and build upon one another throughout your essay? क्या आपके जो आइडियाज है प्रोग्रेस कर रहे हैं? जो भी आपका मेन आइडियाज, वॉट एवर द मेन आइडिया यू हैव रिटन, इज इट शोइंग प्रोग्रेशन? Are you showing progression in your main ideas or are you progressing with your ideas? और क्या आप सिर्फ रिपीट तो नहीं कर रहे उसी बात को बार बार डिफरेंट सेंटेंसेस की फॉर्म में? अगर आप रिपीट कर रहे हो दैट इज रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया, बट यू हैव टू शो द प्रोग्रेशन इन योर essay to score good in coherence. Now, could native speaker understand your essay clearly? If yes, अगर आप ये सब चीजों के आंसर yes में करते हो, it means you are writing a good essay. Now let's understand as per the band descriptor what we need to do in our coherence and cohesion. So this is the coherence and cohesion band descriptor. This is 6, 7, 8 and 9 band. Now, so if I talk about 6 band, the student here is arranging the information and ideas coherently and there is clear overall progression. Progression है, clear overall progression है, ideas जो है, information जो है अच्छे से arranged है. Cohesive devices तो effectively use कर रहे हैं, but cohesion जो है with and or between the sentences may be faulty or mechanical. आपके जो
इफ यू आर जो कोहेसिव डिवाइसेस है आपके या जो कोहेजन आपके है वो फॉल्टी है या मैकेनिकल है, यू आर समवेयर यूजिंग wrong connectors or you are using them mechanically. I've seen student memorizing to begin with, moreover in addition finally. You don't have to memorize. This is called mechanical usage of your connectors. If you will do it, you have to see whatever connectors you are using, जो भी connecting words आप use कर रहे हो वो correctly use हो. Firstly के साथ जब आप उसको इलाबरेट कर रहे हो, आप मोर ओवर से इलाबरेट करोगे तो ये गलत हो जाएगा. मोर ओवर तब यूज होगा जब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट या ऐड कर रहे हैं अनदर पॉइंट, देन वी विल राइट मोर ओवर, right? So we have to understand that we don't have to use connectors faulty and mechanically. Here student is using referencing but not clearly. Referencing क्या होता है? जब हम किसी को रेफर करने के लिए कोई वो pronouns यूज करते हैं. For example, for university I'll say it, right? For universities they, right? So ये मैं यूनिवर्सिटी को रेफर करने के लिए अगर प्रोनाउन यूज कर रही हूँ तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं मेरी रेफरेंसिंग क्लियर हो. सेवन बैंड व्हाट स्टूडेंट इज डूइंग, ही इज लॉजिकली अरेंजिंग, लॉजिकली ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन. प्रोग्रेशन भी क्लियर है थ्रू आउट. वाइड रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस स्टूडेंट यूज कर रहा है बट वो अंडर या ओवर यूज कहीं ना कहीं कर रहा है. हमने 7 बैंड की प्रिपरेशन नहीं करनी, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 8 और 9, तभी हम 7 तक स्टे करेंगे, राइट? सो अगर आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज कर रहे हो, डू नॉट अंडर यूज देम और डू नॉट ओवर यूज देम. यूज देम सफिशिएंटली, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो उसको, राइट? हर पैराग्राफ का सेंट्रल टॉपिक क्लियर होना चाहिए. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ दिस इन अदर स्लाइड्स. सेंट्रल टॉपिक बेसिकली पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है. अगर पैराग्राफ में रीजनिंग दी है तो आपकी फर्स्ट लाइन पढ़ के समझ आना चाहिए कि दिस पैराग्राफ विल टॉक अबाउट रीजंस. So if they are asking about reasons for obesity, the major reasons for obesity is, so I'll give my reason. So the first line is indicating that this paragraph, in this paragraph I'm going to write reason. Then for 8 band, information, sequence of information and ideas, how you are sequencing it is logically arranged. हर idea एक अच्छे logic में arrange है, अच्छी तरह presented है, right? All aspects of cohesion, सारे cohesive devices आप अच्छे से sufficiently use कर रहे हो. Paragraphing sufficiently और appropriate है, राइट? सो सिंपल है. 9 बैंड्स के लिए पैराग्राफिंग आपकी बहुत स्किलफुली होनी चाहिए. सेकंड, यू आर यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस, जो भी कनेक्टर्स आप यूज कर रहे हो करेक्ट होने चाहिए, एक्यूरेट और सफिशिएंट, ना ज्यादा ना कम, जितने चाहिए उतने ही कनेक्टर्स होने चाहिए. हर सेंटेंस को वी कैन नॉट ऐड बाय यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड्स, right? We'll be talking about different connectors in other videos, in other chapters. We have a separate chapter for linking and connecting words which will help you to understand more in detail about these connectors. We have taken examples here. Now we have discussed about center idea. हमने 7 बैंड में क्लियर था कि 7 बैंड के लिए हर पैराग्राफ का सेंटर आइडिया होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई पैराग्राफ इज स्टार्टिंग विद on the one hand it could be argued that sportsmen's salaries are too high. Now second is, on the one hand there are number of advantages to working from home. It means this paragraph will talk about advantages. It is very much clear from the first line. In this paragraph I will be giving 1 or 2 advantages. Because it is advantages, maybe I will be writing 2 advantages. So from the first line my central topic is clear. मेरा पैराग्राफ किसके बारे में बात करेगा, इसमें एडवांटेजेस होंगे, रीजंस होंगे, क्या होगा, ये मेरी फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है. अब जो अगर हम, इफ आई रीड द फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी, on the one hand it could be argued that sportsmen's salaries are too high. So here I will be talking about the reason why sportsmen's salaries are too high. Maybe I'll be giving 1 or 2 reasons in this paragraph. So it is very much clear from the first line. आपका जो पैराग्राफ है उसका क्या आइडिया है, पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है, that is called center topic, and it should be very much clear by reading your first line of the paragraph. Now let's take a quick top tip for topic sentences. Before you write any paragraph, ask yourself simple question. What is the main topic of this paragraph? The answer will be your topic sentence. इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किसके बारे में बात करेगा, अपने आप से पूछो. मैं इस पैराग्राफ में क्या लिखने वाला हूँ, रीजंस,
आई एम गोइंग टू डिस्कस एनी पॉइंट, आई एम गोइंग टू गिव कॉजेज, प्रॉब्लम्स, क्या बोलने वाला हूं, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, जो भी आपके आंसर आएगा दैट इज योर टॉपिक सेंटेंस, वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा कि मैं इस पैराग्राफ में इसके बारे में बात करूंगा. तो दिस पैराग्राफ विल डिस्कस अबाउट रीजंस, advantages, whatever will be the answer, that is your topic sentence. Now transitional signals, right? Let's understand. करेक्टली यूज करने हैं, ये भी कनेक्टर्स की तरह होते हैं. जब हम चेंज करते हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया को, तो हम जो भी कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं ट्रांजिशनल सिग्नल. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज. सिग्नल जो उस चेंज की तरफ इशारा करे, दैट इज ट्रांजिशनल सिग्नल. नाउ this is the first sentence I have. Firstly, I believe that children should be taught in mixed classes. In addition, this will help them to learn how to socialize with other sex. Am I using this transitional signal correctly? मैंने पहले बोला कि children को mixed schools में, mixed classes में पढ़ना चाहिए. Children should be taught in mixed classes. In addition, इन एडिशन मैं ऐड कर रही हूं अगला पॉइंट, ये उनको हेल्प करेगा सोशलाइज करने में विद अदर सेक्स. दिस इज नॉट समथिंग आई एम एडिंग टू दिस पॉइंट, ये गलत हो जाएगा. इन एडिशन में तब यूज करूंगी जब मैंने आगे जाके कुछ और पॉइंट ऐड करना है. मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूं रीजन देके, तो रीजन के लिए मेरा जो ट्रांजिशनल सिग्नल होगा दैट विल बी एज. व्हाट विल बी माय स्टेटमेंट? फर्स्टली, आई बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मिक्स्ड क्लासेस एज दिस विल हेल्प देम टू लर्न हाउ टू सोशलाइज विद अदर सेक्स. So as will my correct transitional signal. This is something which is indicating कि मैं reason दे रही हूँ, right? And in addition का मतलब I am adding another point, I am adding other argument. But here I am not adding argument, I am giving a reason. So I will use a correct transitional signal, right? एक हमने और point किया था overall progression. Now let's understand that also in detail. Overall progression किसको कहते हैं और वो कैसे करना है. Now let's understand that in detail. Firstly, the biggest downside to eating fast food is that it causes obesity. I'm talking about downside of eating fast food. क्या है कि ये obesity cause करता है. People who eat fast food for lunch and dinner are often overweight. जो लोग fast food खाते हैं for lunch and dinner, they are often overweight. For example, recent research shows that 90% of people eat fast food every day have more weight than is healthy. This clearly shows that fast food is bad for our health. Now, इस पैराग्राफ में मैंने क्या किया? I am focusing on only one thing. There is no explanation. मैंने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे पॉइंट्स ऐड नहीं किए. मैं एक ही पॉइंट को आई एम राइटिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. आई एम राइटिंग वन पॉइंट ओनली. For let's understand it in detail again. Downside of eating fast food is that it causes obesity. When we eat fast food, we become victim of obesity. Then people who eat fast food for lunch and dinner are often overweight. Again, same line जो मेरी ये ऊपर first line थी, ये same line मैं repeat कर रही हूँ in different manner. This is what? This is repetition. This is repetition of my previous सेंटेंस. अगेन मैंने एग्जाम्पल भी जो दिया है उसमें भी सेम चीज लिखी है. 90% पीपल ईट फास्ट फूड एवरी डे एंड दे हैव मोर वेट. मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, फास्ट फूड एंड पीपल आर ओवरवेट. फास्ट फूड, दे आर ईटिंग फास्ट फूड एंड दे आर ओवरवेट. आई एम रिपीटिंग ओनली वन थिंग अगेन एंड अगेन. This is no progression. There is no progress. What I have to do? I have to show good progression. Let's understand how. Firstly, the biggest downside to eating fast food is that it causes obesity. This is my main idea. I'm telling about the biggest downside क्या है fast food खाने का, that people become fat. Most fast food contain high amount of saturated fat, salt and sugar, all of which can cause people to put on weight. So this is something I'm adding. This is an explanation which I'm adding to my previous sentence because of the
high caloric food because of the high salt, saturated fats. So people when consume these foods, they actually are consuming saturated fat, salt and sugar, which is making them fat, right? Worse, many of these damaging ingredients are hidden inside food that might seem relatively healthy at first glance. Again, and another point to explain. For example, it is often the salads on the menu that contain most calories as they are covered in high calorie dressing. Right? The example which I'm giving here is linked to my previous sentence. Again, another point to elaborate. As a result, even people who think they are making healthy choices when they eat out are actually consuming ingredients which will lead them to put on weight. So every point was adding a different information, every point was adding a unique information and was explaining, making my main point more stronger, right? So जो मेरा मेन आइडिया था उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था मेरा ईच एंड एवरी पॉइंट विच आई वॉज एडिंग फर्दर. देर वॉज नो रेपिटेशन ऑफ माई पॉइंट. दिस इज नोन एज क्लियर प्रोग्रेशन. So I hope it is very much clear how we need to progress. Now let's take a top tip for progression. Every time you start a sentence, ask yourself if you are adding to your argument or simply repeating. जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है कि आप उसको ऐड कर रहे हो उसको समझाने के लिए कुछ, कि आप उसी को चेंज करके दोबारा दोबारा लिख रहे हो. इफ यू आर एडिंग, ग्रेट. इफ यू आर नॉट, इफ यू आर रिपीटिंग, स्टॉप एंड थिंक. इसको समझाने के लिए मुझे और कौन सा पॉइंट ऐड करना है. बाय हाउ यू हैव टू ऐड पॉइंट्स, बाय आंसरिंग एवरी व्हाई एंड हाउ. हर क्यों और कैसे का आंसर देके आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोग्रेस. Now, referencing. Final, I think referencing, I have already told you when we refer to something. Referring by using pronouns. So they, it, etc. Like we have to use like word. I have given example here. Universities are imparting free of cost education to children and they should continue doing it. Here I am using they for universities. So it is very important to reference, to use referencing in your IELTS essay, but you should use them correctly. Clearly पता होना चाहिए मैं दे किसके लिए use कर रही हूँ, right? So this is called correct referencing. Now students, if they will use referencing in incorrect manner, they might lose their band score. And so this is very important to understand how you have to follow the referencing part. Now let's take quick 4 IELTS tips for coherence and cohesion. It's a summary of this chapter. I hope it is very much clear how we have to write coherently. Now, सबसे पहली चीज, if there is no clear topic sentence, so far we have understood coherence and cohesion in detail. Let's talk about 4 common mistakes which students do in coherence and cohesion, and we will be summarizing this chapter after discussing the 4 common mistakes. First common mistake is no clear topic sentence. If you do not have clear topic sentence, it will be very difficult for examiner to understand what is the main topic, what this paragraph is talking about, and इससे आपका link भी maintain नहीं होगा with the other paragraphs. Now, so it is very important to tell the examiner what the main idea in your paragraph will be in the first sentence. So in the first sentence, it should be very clear about to tell the examiner what is the main idea of the paragraph. Then, if you are using transitional signals incorrectly, this is a very common mistake. I've seen students, they just want to use connector without knowing whether they are using it correctly or not. They are just looking for the words, fancy connectors, and they just want to put them in the writing. This is not how it works. You have to use them correctly. It is not important that you have to use very fancy connectors, but you have to use the correct connectors which will make sense in your writing. So don't use them between every sentence. Yes, you don't have to use them between every sentence. They should be used where they are required, right? Now, the third common mistake is students, they don't progress. There is no progression. They are simply repeating their ideas again and again. Whatever their main idea is, they are repeating it using different language and different style of sentences. You don't have to do that. Every sentence in your essay should add something to make your argument reasonable. Poor referencing. It's great to refer. Referencing is really good. I have given an example of referencing. You can use pronoun, it, they, right? But it should always be clear what pronoun refer to who or
which thing your pronoun is referring to. It should be very clear. अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, नीचे जाके आप रेफरेंसिंग यूज कर रहे हो, अगर क्लियर ही नहीं है ये रेफरेंसिंग आप कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, इट विल एक्चुअली हिंडर द कम्युनिकेशन. एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा और आपके बैंड्स कम हो जाएंगे. सो बेटर टू यूज रेफरेंसिंग करेक्टली. सो these are the four common mistakes in your IELTS coherence and cohesion, and I hope it is very much clear. We have tried to understand each and every part of coherence and cohesion with examples, with good understanding, and it will help you to elaborate on your essay much more clearly. Thank you so much.